Basi Kausal Vikas Yojana, a collaboration between the Ministry of External Affairs and the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Youth members from India and those from the Indian community abroad possess the skills and the talent to play a crucial role in shaping a global inclusive development agenda rooted in India's traditions and cultural harmony and cohesive values. They therefore have the potential to contribute significantly to the realization of a new, resilient and Viksit Bharat. Government of India has consistently promoted those diaspora engagement programs that focus on the youth, like the Know India program. So the PIO youth of today has the opportunity to imbibe a more comprehensive and holistic perspective of India's rich history and cultural heritage, and are inspired to continue towards strengthening their ties with their ethnic motherland, that is India, Bharat. I am confident that the Youth Pravasi Bharatiya Divas today will facilitate exchange of ideas and present invaluable insights from diverse stakeholders on the role that the youth of India and those from the Indian diaspora have been playing in our globalized world to emerge as natural leaders, and what should be the future roadmap for them and relevant stakeholders. The youth of India and that from the Indian diaspora will undoubtedly play a crucial role in shaping the vision of Atmanirbhar Bharat and for fostering human-centric globalization. Thank you. Jai Orissa, Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar. Thank you, Honorable Minister of State for External Affairs, Shri Pavitra Margarita Ji, for the welcome address. And now, ladies and gentlemen, for the opening remarks, I would humbly request Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Government of India, Dr. Mansukh Mandaviya Ji. अठारहवें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हमारे विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर जी, राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन चरण मांझी जी, हमारे विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय रक्षा निखिल खड़से जी, हमारे न्यूज़ वीक यूएसए के सीईओ देव प्रकाश जी, उपस्थित सभी प्रवासी भाइयों बहनों और युवा दोस्तों, आज का अवसर बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। प्रवासी भारतीय दिवस में जब हम 18वें प्रवासी भारतीय दिवस मना रहा है, उस दिवस को डायस्पोरा कंट्रीब्यूशंस टू विकसित भारत की थीम पर तैयार करा गया है। विकसित भारत ये प्रधानमंत्री जी का दिया गया लक्ष्य है। जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष मना रहा था, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने 25 साल के अपने रोड मैप देते हुए 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। और विकसित भारत बनाने में हमारे युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका कैसी हो सकती है, उसके लिए भी अपने विचार रखे हैं। आज जब 9 जनवरी 2025 है, 110 साल पहले
महात्मा गांधी यंग एज में अफ्रीका से हिंदुस्तान परत आए थे। जब अफ्रीका में वो रहते थे तब उन्होंने वहाँ काले गोरे के भेदभाव को नाबूद करने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। वहाँ से बहुत कुछ सीखे थे, समझे थे और ये वहाँ का अनुभव को लेके हिंदुस्तान परत आए। जब वो हिंदुस्तान आया तब उन्होंने आज़ादी की लड़त का एक रूपरेखा भी तैयार करा, क्योंकि वहाँ से वो बहुत कुछ सीख के आए थे। और ये दिन को याद करते हुए प्रतिवर्ष हम प्रवासी भारतीय दिवस जब मनाते हैं तब हमारे प्रवासी भारतीय देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे, देश के साथ कैसे जुड़े, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने हमें कई बार अपना संदेश दिया है। जब आप आते हैं प्रवासी भारतीय के रूप में, तब आपने जिस देश में काम करा है वहाँ का अनुभव आपके साथ है, वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिस आपने देखी है, वहाँ से जो कुछ श्रेष्ठ है, जो वहाँ से आप समझे हैं, ये चीज़ों को हिंदुस्तान में लाके हम विकसित भारत के लिए कैसे हमारा कंट्रीब्यूशन करें वो भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें संदेश दिया कि हमें विकसित भारत बनाना है, देश को आगे ले जाना है। तो हम कैसे ले जाएंगे? देश को विकसित बनाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र को लेके हमें आगे बढ़ना है, हमारी शक्तियों को संयोजना है। आज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है दुनिया में और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूथ इंडिया में है। 20 में से 13 इंडियन सिटीजन युवा है जिसकी एज बिलो 35 है और सारे देश की एवरेज एज 29 ईयर है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। उसको हम कैसे एनकेज करें ताकि हम देश को विकसित भारत बना सके। मैंने देश के युवाओं की शक्ति को देखा है। जब देश में कोविड क्राइसिस आई उस वक्त मोदी जी ने मुझे भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर के रूप में दायित्व दिया था। जब वैक्सीन की रिसर्च की बात आई, मैंने देखा हमारे युवा साइंटिस्ट ने लीड करा, मेहनत करी और होल्ड वायरस से बना हुआ विश्व का पहला और एकलौता वैक्सीन बनाने में हम सफल रहे थे। इतना ही नहीं, लेकिन हमने वैक्सीन तो बना लिया, लेकिन वैक्सीनेशन अभियान चलाना था। जब वैक्सीनेशन अभियान चलाना था तब देश के हमारे युवा डॉक्टर्स, हमारे युवा नर्स, हमारे युवा पैरामेडिक स्टाफ घर घर गए, दूर सुदूर हिमालयन रेंज में गए, रेगिस्तान, राजस्थान के रेगिस्तान के क्षेत्र में 5-5, 10-10 किलोमीटर चल के गए और 220 करोड़ डोज लगाने में हम सक्सेस रहे ताकि हम कोविड क्राइसिस के सामने जीत पाए। उसमें मेरे देश के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विकसित भारत के लिए हमने देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी मिले, राष्ट्रीय प्रवाह में अपने कंट्रीब्यूशन बेस्ट कर पाए। मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत बनाना है तो हमें 140 करोड़ की जनता को एक साथ में लेकर चलना होगा, देश के युवाओं को अपॉर्चुनिटी देना होगा। आज जिस 18 साल के युवा है वो 25 साल के बाद विकसित भारत के नागरिक बनेंगे। उस वक्त उनके सपनों का भारत कैसा है, कैसा बनाना चाहिए, वो कैसा विकसित भारत चाहते हैं, उसका विजन भी विकसित भारत में समाहित होना चाहिए। और इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने एक नया इनिशिएटिव लिया। देश में 11-12 जनवरी को हम यूथ फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा कि इस बार हम यूथ फेस्टिवल एक अलग तरीके से मनाएंगे। हर बार देश के कोई सिटी में यूथ फेस्टिवल के माध्यम से देश के युवा एकत्रित होते थे, संवाद करते थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने कहा कि देश के युवा विकसित भारत के लिए
क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। ऐसे 30 लाख युवाओं ने विकसित भारत क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा। उसमें से 2 लाख युवाओं को आइडेंटिफाई करा और उसको 10 सेगमेंट में विकसित भारत के लिए ऐसे लिखने के लिए कहा। 2 करोड़ में से 60,000 युवाओं ने लेटर लिख के दिया और ये लेटर का असेसमेंट करा गया। उसमें से 9,000 युवाओं को विकसित भारत कैसा होना चाहिए, वो कैसा विकसित भारत चाहते हैं, युवा विकसित भारत में कैसा कौन सा कंट्रीब्यूशन कर सकता है, उसके लिए प्रेजेंटेशन दिया और देश के 3,000 युवा 11-12 जनवरी को प्रधानमंत्री जी के सामने 2047 में भारत को विकसित बनाने के लिए अपना विचार साझा करेंगे। तब जाके देश विकसित भारत बन पाएगा। उसमें युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए मोदी जी ने अहम कदम उठाए हैं और साथ में कहा कि युवाओं को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है, बेस्ट एजुकेशन देना है, उसकी शक्तियों का उपयोग करना है। उनकी शक्ति देश में लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए कैसे हो और पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलप करने के लिए 1 लाख युवाओं को तैयार करने का सपना भी प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उस दिशा में काम करना चालू करा है। आप सब प्रवासी भारतीय के रूप में जब देश में आए हैं तब प्रधानमंत्री जी ने हमें कई बार कहा कि आप इस कार्यक्रम में भी आते हैं, उनके अलावा भी आपका रिश्ता है, आपका परिवार है, आपका विलेज है, आपका स्टेट है। जब जब आप हिंदुस्तान आओगे, भारत आओगे, तब वहां के लोगों को भी हिंदुस्तान में, भारत में लेके आना, देश को दिखाना, देश की डाइवर्सिटी की पहचान कराना और वहां जो ज्ञान है वो भी लाना है, वहां का अनुभव भी लाना है और हमारे देश के साथ उसको साझा करना है। मैं मानता हूं कि अभी यही समय है और मोदी जी ने कहा सही समय है, यही समय है, सही समय है। हम सब लोग भारतवासी, 35 मिलियन भारतवासी जो हमारे प्रवासी भारतीय है, हम सब लोग देश के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए अपनी अपनी तरह से, अपने से जो भी हो सके वो देश के लिए कंट्रीब्यूट करके हम 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने लाए। यही आप सबसे अपेक्षा है। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, आपके संबोधन के लिए, आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री जी ने विकसित भारत का जिक्र किया और 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का थीम भी है डायस्पोरा's contribution to a विकसित भारत। Ladies and gentlemen, our Honorable Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandaviya ji. Our guest of honor of Youth Pravasi Bharatiya Divas is Mr. Dev Pragar ji. He is from USA. He is President, CEO and co-founder of Newsweek. Dr. Dev Pragar ji was born in India and he grew up in United Kingdom. He did his bachelor's in computer sciences and PhD in mobile internet. He also holds an executive program diploma from Harvard Business School. Dr. Dev Pragar's leadership has resulted in Newsweek reaching over 100 million monthly readers and achieving profitability. May I request Dr. Dev Pragar ji to kindly address the August gathering. Dr. Dev Pragar ji. Dr. S. Jaishankar, Honorable External Affairs Minister, Dr. Mansukh Mandaviya, Honorable Minister of Youth Affairs and Sports,
Shri Mohan Charan Maji, Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Pabitra Margarita, Honorable Minister of State for External Affairs, Ms. Raksha Nikhil Khadse, Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, distinguished guests, and to the reason for the significant gathering today, my dear young global Indians, Namaste. A very good morning to you all. It is an absolute honor to address you all at this historic 18th Pravasi Bharatiya Divas, a platform that exemplifies the strength and unity of our Indian diaspora, whose achievements continue to inspire and elevate India's standing globally. It is a great privilege to be in this forum and in the company of your previous honorees, leaders of the global Indian diaspora that has shaped and is shaping so much of our common future. My story is quintessentially American. The striving immigrant with a dream, pulling off a business turnaround of an iconic American brand against impossible odds in New York City, the city that never sleeps. Today, as a family, we are proud American citizens. Yet, it is also a quintessentially Indian story. In fact, as many Americans of Indian descent will attest, the Indian heritage did much to make the American success possible. So let's begin with my Indian story. I was born in 1984 in the South Indian city of Coimbatore in Tamil Nadu. I am Indian by birth, heritage, and culture. I spent the first 11 years of my life here in India. The memories and culture of this land are deeply engraved in me. Indian food is my go-to comfort food. My parents emigrated from India when I was 11 years old, briefly to the Middle East before settling in London, England. My father is an IIT graduate who became a professor. Education played a major role in our family. Like many from the Indian community, I obtained an engineering degree, followed it with a PhD from King's College, London, whose current president and vice chancellor, Satish Kapoor, who's a good friend of mine, is also of Indian origin. My first stint in media was in London, where I learned the nuances of digital media and the advertising business. It was also in London, a melting pot of the world, where I met my future wife, who's from Czech Republic. For me, a globalized world is not just a matter of corporate strategy. At home, it can lead to delicious but often very confusing dinner menus. My American story really begins in 2016 when I moved to New York to lead and then own Newsweek, the storied American publication that had fallen on hard times. After decades of global dominance as a news magazine, Newsweek had been through 4 owners in 11 years, including through the hands of some of the biggest names in American publishing. After a decade of near bankruptcies, fire sales, and bailouts, the rescue of Newsweek was dismissed as a fool's errand. The business logic of a turnaround did appear to be foolish, but I refused to accept it. Newsweek had been part of the fabric of the American life for nearly a century. It was worth saving, in my view. There was value in that legacy that was perhaps a little bit easier for me to see
as an Indian-born immigrant from a culture where past and present connect more seamlessly. Then there were the risks. Had I failed, it'd be a far cry from standing here. I'd have faced both financial and reputational ruin. No project this daunting could be undertaken without the guiding light of a higher purpose. For that inspiration, we again turn to the history and heritage of the brand. Newsweek had lost its way not just because of technological disruptions, but because it had strayed from its roots as a magazine for all Americans. It had turned away from the values and viewpoints of our vast and diverse country and taken shelter among the coastal elites of America. The magazine's relevance, credibility, and audience had crumbled along with its financial health. We resolved to rebuild Newsweek on the values of nonpartisan journalism, to speak to and listen to people across the political and cultural spectrum, and to welcome diverse voices in the pursuit of finding common ground. We did this not just out of the reverence for the past, but because we believed it was the right thing to do for America's future. Deeply divided, Americans were talking past each other. The media was part of the problem, not the solution. The pursuit of common ground and fair journalism was good for democracy, good for America, and good for the world at large. I must confess, I probably will not be... नमस्कार सकाळ बड़ खबर को स्वागत करछि मोर्चिना नजर पकाइबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे जे आरंभ हैला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आरंभ होइछि। मुख्यमंत्री ए सम्मेलन को उद्घाटन बा शुभारंभ करिसेंती। भुवनेश्वर जनता मैदान रे सम्मेलन आरंभ होइछि। शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं केंद्र वैदेशिक मंत्री केंद्र मंत्री मनसुख मांडविय मध्य उपस्थित रहिसेंती। भुवनेश्वर जनता मैदान रे 3 दिन धरि चलिबो। आज आसबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राति 8टारे भुवनेश्वर विमान बंदर रे पहुंचबे। आसंता काली अनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री। तेबे गुरुत्वपूर्ण चित्र आपण देखुछंती जे आज ठारू प्रवासी भारतीय सम्मेलन भुवनेश्वर जनता मैदान रे 3 दिन धरि चलिबो। प्रथम थर पई ओडिसा रे आयोजित हेउथिबारु उत्सव मुखर होइछि। राजधानी प्रवासी आयोजित होइछि स्वतंत्र मेला प्रदर्शनी पार्क फेस्टिवल एवं राजा रानी रे संगीत उत्सव मुक्तेश्वरी रे नृत्य उत्सव आयोजित होइछि। प्रवासी को स्वागत करबा पई प्रस्तुत रहिछि जनता मैदान। युवा समावेशरू आरंभ एवं सम्मेलन जहां संबोधित करिवे वैदेशिक व्यापार एवं युवा व्यापार मंत्री ओडिशार मुख्यमंत्री। आसंता काली अनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करिवे प्रधानमंत्री। आज राति 8टारे ओडिशा रे पहुंचिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उद्घाटन परे विकसित भारत 2047 संपर्कित प्रवासी सह आलोचना करिवे रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। विभिन्न सेशन रे देशर विदेशर व्यक्ति विशेष माने प्रवासी सह आलोचना करिवे। शेष दिन रे केंद्र संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मध्य एक सेशन रहिबो। प्रति संध्यारे आयोजित हेबो सांस्कृतिक कार्यक्रम रे जोग देबाकू 70 रु अधिक देशरु आसुछंती मूल प्रवासी भारतीय। सेमारे जाजपुर कटक भुवनेश्वर एवं पुरी रे 21टी पर्यटन स्थली बुलिबे। डबल डेकर बस रे बसी राज्य रे 21टी पर्यटन स्थली बुलिबे प्रवासी भारतीय। प्रवासी को अतिथि पाई पूरा प्रस्तुत रहिछंती राज्य सरकार। एकाम्र पार्क रे आयोजित होइछि 5 दिनिया पुष्प प्रदर्शनी। एवली कि फूल संभार सह प्रवासी को आकर्षण करिबो नाटक कार्केट हाउस जहाँ को नहीं गतकाली उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे से बड़ी विभिन्न पार्क रे म्यूजिक फाउंडेशन एवं लेजर शो जरिया रे राज्यर कला संस्कृति परंपरा आदि प्रदर्शित हेबो। अधिक सूचना पाई आ सहित जोड़े आम प्रतिनिधि प्रशांत दास। प्रशांत
ये जो चित्र सामना को आसुची जे प्रवासी भारतीय सम्मेलनी एक प्रकार उद्घाटन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी एवं आसंता काली प्रधानमंत्री यहाँ विधिबद्ध भाव में उद्घाटन करेंगे कौन रही चित्र ग्राउंड जीरो देखो जदि आप देखिए प्रवासी भारतीय जदि आप कार्यक्रम देखिए उद्घाटन हो सारी आज प्रथमतः युव प्रवासी भारतीय कार्यक्रम जहाँ रही उद्घाटन रही वैदेशिक जो व्यापार मंत्री रही जयशंकर रही एस जयशंकर एवं मनसुख रही मुख्यमंत्री ओडिशार यदि आप देखिए मोहन चरण माझी रही समस्त राष्ट्रपाय मंत्री जो माने विभागीय रही पीबीडी रे जो मानकर भूमिका रही से माने उपस्थित रही युव प्रवासी भारतीय वर्तमान स्थिति रे आरंभ हो सारी न्यूज वीक जदि आप देखिए यूएस रो अमेरिकार गोटे संस्था तार मध्य सीओ मध्य उपस्थित रही युव प्रवासी मान को प्रेरित करा जाउची आज गोटे जो आरंभ होती 4टी सेक्शन ने करा से 4टी सेक्शन ने जदि आप देखिए विभिन्न कार्यक्रम गुड़िक रखा जाइए युव प्रवासी को आकृष्ट करने अनेक प्रकार पदक्षेप निया जाइए कहीं आप देखिए विगत मासे धरी ये जो प्रवासी भारतीय पे स्वतंत्र प्रस्तुति करा जाउथला राज्य सरकार मध्य जदि आप देखिए अतिरिक्त बजेट अधिवेशन समय स्वतंत्र बजेट मध्य 125 कोटी टंका आनिथिले मुख्यमंत्री तथा अर्थ विभाग मंत्री मोहन चरण माझी एवं केंद्र सरकार जदि आप देखिए से भी मध्य प्रवासी तथा पीबीटी कार्यक्रम पे मध्य गोटे स्वतंत्र बजेट अलॉट करथिले दुई सरकार तथा राज्य एवं केंद्र सरकार मिलित जो अर्थ राशि संपूर्ण व्यवस्था करा जाइछि एवं गोटे प्रकार जो प्रवासी हुए तो संख्या वर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारि नहीं केते संख्यार प्रवासी अंकर आगमन रही किंतु सरकार जहाँ टार्गेट रखिछन्ती 7000 रु ऊर्ध्व प्रवासी को आनिछन्ती एवं एठी गोटे प्रकार तांको ओडिशार कला संस्कृति भास्कर्य जहाँ भी रही ताहाकू केउली भाव रे सेमाने उपभोग करि परिबे एवं ओडिया परंपरा सहित सेमाने चली परिबे एवं ओडिया परंपरा सह सेमाने खाप खाई ये जो 2 दिन रहिबे सेमाने सेठी संपूर्ण भाव रे ओडिया भाव रे चलिबे तापे मध्य व्यवस्था करा जायछि देखंतु पाखापाखी पुरी जाजपुर कटक भुवनेश्वर ये जो 4टी नियरेस्ट अंचल गुड़िक रही से अंचल गुड़िक व्यापक व्यवस्था करा जायछि आपण रघुराजपुर तालपत्र कथा कहतु पिपिली चांदुआ कहतु भुवनेश्वर मंदिर मालिनी सहर समस्त मंदिर ऐतिह्यर कथा कहतु जाजपुर माँ विरजा कथा कहतु एवं कटक रे बारबाटी स्टाडियम ठू नहीं बारबाटी दुर्ग ठू नहीं ये जो ऐतिह्य रही पाखापाखि 21टी ऐतिह्य स्थली को कोणार्क ये जो समस्त स्थली गुड़िक परिभ्रमण करने व्यवस्था करा जायछि एवं रंगारंग कार्यक्रम व्यवस्था अपराह्न समय करा जायछि जहाँ पे आप देखिए राज्य सरकार पक्षर स्वतंत्र बस से व्यवस्था करा जायछि डबल डेकर बस 5टी भेटी दि जायछि पाखापाखि 10टी ऊर्ध्व मंदिर प्रशासक जगन्नाथ मंदिर प्रशासक पक्षर जोगाई दि जायछि जे एही समय जो प्रवासी माने महाप्रभुंकर दर्शन करने चाहिए से बस रे सी महाप्रभु सहित जड़ित संस्कृति ऐतिह्यर जो रंग बेरंगर कार्य कारुकार्य रही से बस रे स्थान पाई एवं से माने जाई यदि आप देखिए महाप्रभुंकर दर्शन करने सह कोणार्क परिभ्रमण करें ये व्यवस्था करा जायछि तेबे जेतेबेले प्रथम अध्याय कार्यक्रम वर्तमान स्थिति आरंभ हो सारी युव प्रवासी भारतीय सम्मेलन आरंभ हो सारी आज आप जानते अपराह्न द्वितीय अध्याय आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचुंट आसंता काली से समग्र प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे प्रवासी भारतीयों को जनता मैदान में होता जो मंच से उपस्थित रही शुभारंभ करेंगे वैदेशिक व्यापार मंत्री रहिबे मुख्यमंत्री रहिबे एवं अन्य अन्य मंत्री परिषद सदस्य माने जो माने रहिचंती सेमाने मध्ये जड़ित होई रहिबे एवं गिरिराज सिंह को कथा कहतु जो मंत्री सदस्य रहिचंती सेमाने मध्ये रहिबे तेबे संपूर्ण प्रस्तुति भितर यदि आपण देखि वर्तमान स्थिति प्रवासी भारतीय कार्यक्रम अनुष्ठित होईची एवं जनता मैदान में जेहेतु अनुष्ठित होईची 2 जण केंद्र मंत्री रहिचंती एवं मुख्यमंत्री रहिचंती एवं राष्ट्रपाहर जो मंत्री परिषद सदस्य सेमाने मध्ये रहिचंती एवं अनेक देशर यदि आपण देखिबे नेतृत्व जो माने आसिछंती प्रतिनिधि मंडल से उपस्थित रही तेज संपूर्ण भाव में यह कार्यक्रम को किभली भाव में सठिक भाव में जो प्रवासी मैंने आसुवे से केमती कौन से असुविधा न हो से समस्त प्रकार सुविधा सहयोग पाइपर लक्ष्य रखा कहीपर निहाती भाव में सब दिग को नहीं लक्ष्य रखा जिते प्रधानमंत्री निजे आसुंच सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित जोड़ी प्रशांत दास आम प्रतिनिधि जहाँ अधिक सूचना देते।
आसवा परवर्ती खबर को आज 3 दिन धरी पालन हेब प्रवासी भारतीय दिवस एने पूरा प्रस्तुत होछि बौद्धपीठ रत्नगिरी। भारत सरकार विदेश मंत्रालय पक्षर एक कार्यक्रम उद्देश्य विभिन्न देश में रोतिबा भारतीय मानक एकत्रित करी सुसंपर्क स्थापन करने सह परस्पर सहित भाव विनिमय पाई प्रवासी भारतीय दिवस गुरुत्वपूर्ण रही। जहां नहीं राजधानी भुवनेश्वर नुआ रूप से सजई होता बेले जाजपुर जिला बरी ब्लॉक रे थिबा विश्व प्रसिद्ध बौद्धपीठ रत्नगिरी रे व्यापक प्रस्तुति शेष होइछि। विश्व प्रसिद्ध रत्नगिरी रे पर्यटक विभाग पक्षर समिति किछि प्रस्तुति करा जाइतिबा बेले जाजपुर जिलापाल निर्देश क्रमे बरी ब्लॉक प्रशासन पक्षर रत्नगिरी पर्वत चतुर्पार्श्व को सफा करने सह अंचल को प्लास्टिक मुक्त करा जाइछि। देखिए प्रवासी भारतीय रत्नगिरी प्रस्तुत चलती कौन कौन प्रस्तुत होची केमती कौन व्यवस्था होची प्रवासी भारतीय दिवस उपलक्षे ओडिशा सरकार तथा भारत सरकार मिलित उद्यम जो करा जाउची सेति आम रत्नगिरी आ उदयगिरी स्थानित होईची। आम आशा रखिबू जे जो प्रवासी भारतीय माने आमर ए सम्मेलन के आसुचंती ता सहित उदयगिरी रत्नगिरी बौद्ध कीर्तिराज को देखा आसबे सी गोटे सुंदर अनुभूति नहीं जीवे ए सरकार निर्देश प्रकार। आसतु सीधा सड़क नजर पकाइबा विदेशी भारतीयों को संबोधित करुछंती वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर कौन रही वार्ता आसतु शुणा। तेबे विदेश आसीथिबा भारतीयों को संबोधित करुछंती एस जयशंकर कौन रही प्रतिक्रिया कौन कहउछंती आसतु शुणा। Good. At a time when so many key developments in the world are being shaped by this younger generation, whether we talk of AI or EV, innovation or startups, space or drones, sports, chess, cricket, there is all the more reason to do so. Friends, at home, we have just started our journey towards Viksit Bharat in the Amrit Kal. This is an endeavor that is very much about the future generation. After all, it is in this period that they will come to the front ranks of our society and lead our nation. A large part of our efforts is to give the right motivation to the younger generation to accelerate their efforts. While development itself is a very complex task, it becomes much easier when we are confident that nothing is beyond us. I still recall some time ago an observation by a famous Indian badminton player, P.V. Sindhu, on why Prime Minister Modi is a youth icon. She summed it up as his attitude, which moved the nation from chalta hai to badal sakta hai to hoga kaise nahi. Indeed, it is this very spirit which has driven our achievements in recent years. When confronted by the COVID pandemic, India demonstrated a remarkable resilience and strong recovery thereafter. And I remember working with Mansukh Bhai as Health Minister during that period. The very country that was predicted to go under ended up supplying vaccines and medicines to the entire world. A different but equally telling example is what we see in the realm of space, where there is a growing competition internationally. Our Chandrayaan-3 landing, the Aditya L1 observatory, and the proposed Gaganyaan mission are powerful inspirations. In a digital era, the scale of UPI transactions speaks volumes both of our infrastructure and of our mindset. The new India, with 90,000 startups and 100+ unicorns, has calling cards like Drone Didi, Atal Tinkering Labs, hackathons, green hydrogen mission, or nano fertilizers. Friends,
Ambitious visions need strong foundations to be realized. Our collective prospects are no exception to that rule. Here again, it is critical to invest in our youth in order to achieve their full potential. Many of you would be familiar with various campaigns and programs to develop India undertaken since 2014 under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Whether it is Swachh Bharat or Beti Padhao, Awas or Anna Yojana, Mudra or Swanidhi, Ayushman Bharat or Jal Jeevan, each one of them has been a transformational effort. However, if you were to see them in their entirety, connecting those dots will give you an appreciation of how we are securing the future of our youth. They will help bring their skills and creativity to the fore, ensuring that India's talents are fully available to the global workplace. Friends, given the rapidity of the changes underway, it is also essential that we step up efforts to keep the diaspora continuously connected. It is a matter of satisfaction to know that Know India program and Bharat Ko Janiye quiz are now getting much more traction than in previous years. We also regularly welcome the visits of PIO journalists to India. Let me take the opportunity to urge you on behalf of Prime Minister Modi to promote India as a tourism destination. If young Indian PIOs bring their equally young friends from abroad to explore this uniquely rich and diverse heritage and culture, this will surely become a lifelong habit for them. Let me also say a few words about our guest of honor. Normally, we pick somebody from the political world for that position. On this occasion, we have made a departure, I think a very understandable and I think a very justifiable departure of picking someone from the world of media, from the world of business, because Indians today, young Indians today are succeeding in so many domains, and it's important that we recognize that. Friends, allow me also to say a few words about the great state of Odisha. This state offers a tremendous opportunity to experience personally much of what we would be discussing in the course of the PBD. Its cultural festivals and religious and archaeological sites are a reminder why we in India consider ourselves to be a civilizational society. It is equally a living testament to the development progress in all its dimensions. When it comes to the youth, their optimism and energy is very much on display in Odisha, whether it is in institutions of learning or those we encounter in our daily life. So let me conclude by saying this. We are today well on the way to addressing long-standing challenges to build a modern, inclusive and progressive society. Our quest is unique because the largest nation in the world is developing in that matter in a democratic framework. The mantra of the journey is to advance, as Prime Minister Modi says, to advance on the two legs of technology and tradition. And the youth can surely be a defining factor in the pace of that endeavor and the realization of our goals.
So once again, I welcome you to Bhubaneswar. I welcome you to the PBD 2025. I'm sure all of you will have a remarkable next few days ahead. I thank you for your attention. Jai Jagannath, Jai Bharat, Jai Hind. Thank you, Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankarji, for motivating us, for enlightening us. Bharat ke Videsh Mantri, Dr. S. Jaishankarji. And now, ladies and gentlemen, I would humbly request Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi ji, to kindly deliver your address. Jai Jagannath, Honorable External Affairs Minister Sri S. Jaishankar ji, Honorable Union Minister, Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya ji, CEO and co-founder Neojoy from USA Dr. Dev Pragad ji, Honorable Minister of State External Affairs Sri Kirti Vardhan Singh ji, Honorable Union Minister of State Youth Affairs and Sports Srimati Raksha Nikhil Khadse ji, Honorable Union Minister of State for External Affairs Sri Pavitra Margarita ji, समस्तंकु नमस्कार। मु सारा ओडिशावासी तरफरु आपण मानंकु समस्तंकु ओडिशा को एवं मंदिर मालिनी सहर भुवनेश्वर को स्वागत करुछि। आपण मानंकर उपस्थिति आज भुवनेश्वर रे आनिछि आनंदर लहरी, खुशीर संभार। एही किछि दिन धरी ओडिशावासी अजस्र स्नेह और श्रद्धार सहित आपण मानंक अपेक्षा रे थिले। आज से अपेक्षार अंत होइछि। मु आशा करुछि भुवनेश्वर रे प्रथम थर पई अनुष्ठित ही उत्सव आपण मानंक पई एवं आम पई जीवनर एक अभूला स्मृति हेई रहिबो। आउ आगामी दिन रे ए संपर्कर सेतु आहुरी सुदृढ़ हब। वेलकम टू द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा एंड टू द सिटी ऑफ टेम्पल सिटी ऑफ भुवनेश्वर। Bhubaneswar is now ready to welcome you in every corner and at every square. This is an occasion celebrated to honor the invaluable contributions of Indians worldwide and to explore new opportunities for brotherhood and collaboration. Hosting this prestigious event here in Odisha is a matter of immense honor and pride for us. It is a confluence of ideas, cultures, and achievements that showcase the strength of global Indian identity. Friends, today we celebrate the exceptional contributions of over 30 million Indians living across 200 countries. You are our cultural ambassadors, embodying the
essence of India in your host nations, and you are our pride. When you excel abroad, we rejoice here. From being front runners in science and technology, to leading global corporations, to shaping policies in government across the world, the Indian diaspora has demonstrated resilience and excellence. Top business leaders like Gopi Chand Hinduja and Ellen Mittal, CEOs like Indira Nai, Sundar Pichai, and Satya Nadella, scientists like Venkat Ramakrishnan, fashion designers like Vibhu Mahapatra have brought immense pride for our motherland. You have embraced the cultures of your adopted home countries while nurturing and sharing the values of India, values rooted in family, community and humanity. This year's theme, Diaspora's Contribution to a Vikasit Bharat, recognizes and celebrates the contributions of Indian diaspora in building a Vikasit Bharat in the Amrit Kal. Ladies and gentlemen, allow me to take you on a walk through Odisha, the land that warmly welcomes you today. Odisha is a land of timeless heritage. Odisha is a treasure trove of history, culture and natural beauty. From the majestic Sun Temple at Konark to the sacred Jagannath Temple in Puri, our state is home to some of the most iconic landmarks of Indian civilization. I would like all of you to explore nature's secret in Odisha and take a little bit of Odisha along with you. While Odisha's past is steeped in history, its present is defined by transformation and progress. Today, Odisha stands as a leader in mining and industries such as steel, aluminium, while emerging as a hub for sports, IT and skill development. Skill in Odisha is a preferred brand name. We have been making significant strides in education, healthcare and infrastructure, ensuring inclusive growth and sustainable development. Our recognition as a sports powerhouse is testament to our commitment to excellence. Friends, to our brothers and sisters in the diaspora, I extend an open invitation to reconnect with your roots and rediscover the magic of Odisha. Whether it is through cultural exchanges, business ventures, or educational collaborations, we welcome your ideas, investments, and entrepreneurship. In Odisha, opportunities abound in sectors such as technology, renewable energy, infrastructure development, education, and tourism. We also value the role of the diaspora in promoting brand Odisha globally. You are our ambassadors, bridging cultures and creating opportunities for Odisha on the world stage. प्रिय मित्रों, हमें पता है आप जहां भी रहते हैं, इंडिया आपके दिल में बसता है। आपके अचीवमेंट्स हमें खुशी देता है। आपके लिए हम सब गर्व करते हैं। भुवनेश्वर में इस कार्यक्रम करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को
और विदेश मंत्रालय को धन्यवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप सब इन 3 दिनों में ओडिशा के संस्कृति और ऐतिह्य के बारे में जानें। पुरी, कोणार्क, धौली, चिलिका लेक आदि बहुत सारे पर्यटन स्थल को जाएं और इसके साथ ओडिशा के लेजीज खाने डालमा, रसगुल्ला और छेनापोड़ के मजा भी लीजिए। भुवनेश्वर में इस अवसर पर बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है। आप सब ये सभी देखना चाहिए। इससे ओडिशा के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा और ये रिश्ता अटूट रहेगा। Dear friends, before I conclude, let me leave you with a message of hope and determination. Together we are stronger. Together we can build a Viksit Odisha, a Viksit Bharat. Once again, I welcome you to Odisha. Let this Pravasi Bharatiya Divas be a celebration of our past, a reflection of our present, and a vision for our future. This event, I believe, will be a hallmark in cementing our bond as a family. Thank you for being here. धन्यवाद। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय। Thank you, Honorable Chief Minister Sir, for your address. देवियों और सज्जनों, ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी उद्बोधन कर रहे थे। And now for word of thanks, I would request Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Government of India, Ms. Raksha Nikhil Khadse ji. Honorable Shri Mohan Charan Majiji, Chief Minister of Odisha, Honorable Dr. Jaishankar ji, Minister of External Affairs, Honorable Dr. Mansukh Mandviya ji, Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Dev Pragat ji, CEO and co-founder Newsweek from the USA, Honorable Kirtivardhan ji, Minister of State of External Affairs, Honorable Dr. Pratibha Margarita, Minister of State for External Affairs, distinguished dignitaries, distinguished Pravasi Bharatiya delegates, ladies and gentlemen, I am deeply honored and privileged to stand before you today to extend heartfelt gratitude on behalf of the organizing committee and all dignitaries guests at the 18th Yuva Pravasi Bharatiya Divas held in Bhubaneswar. First and foremost, I could like to express our sincere thanks to our esteemed chief guest, Honorable Shri Mohan Charan ji, Chief Minister of Odisha. Your presence today, sir, has not only made this event a grand success, but also reflect the warm hospitality and forward-looking vision of the state of Odisha, for which we are all deeply grateful. We are privileged to have been graced by the insightful words of Honorable Dr. Jaishankar ji, Minister of External Affairs. Your guidance and unwavering support for our global Indian diaspora have truly made this event a milestone in strengthening the bond between India and its overseas communities. A special thanks to Dr. Mansukh Mandviya ji, Minister of Youth Affairs and Sports, for highlighting the importance of empowering our youth and ensuring they have tools to become tomorrow leaders. We also extend our heartfelt appreciation to Honorable Dr. Pratibha Margarita, Minister of State for External Affairs, for sharing his vision of vibrant role the youth of India play in shaping our country's future, both at home and abroad. Your perspective have unfortunately inspired all of us today. We are also grateful to the special guest Dr. Dev Pragat ji, CEO and co-founder Newsweek from the USA,
for sharing his valuable thought which have enhanced the global dimension of this significant gathering. Our sincerest thanks go to esteemed Pravasi Bharatiya delegates who have आसवा परवर्ती खबर को हंसिता अनिल गिरफ मामला रे वर्तमान एक बड़ चित्र सामना को आसुछि द्वितीय दिन में चढ़ाऊ जारी रही। गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसुछि जे हंसिता अनिल गिरफ मामला द्वितीय दिन में भी आयकर विभाग रो चढ़ाऊ एकाधिक स्थान रे चली आईटी रेड। हंसिता स्वामी तथा कांग्रेस नेता मनोज आचार्य घरे मध्य रेड। मनोज को बालीगुड़ा स्थित घरे रेड होइछि। भुवनेश्वर रे अनिल महांती घरे मध्य रेड चली। गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसुछि द्वितीय दिन में मध्य रेड जारी रही। धीरे धीरे गुमर फिटुछि जे हंसिता एवं अनिल को गिरफ मामला रे वर्तमान गुमर फिटाउछि धीरे धीरे आयकर विभाग जितेबाला चढ़ाऊ होइछि अनेक किछि तथ्य सामना को आसीबो बोली आकलन करा जाउछि। राजधानी रे हाई प्रोफाइल ठके मामला रे संपृक्त बंटी बबली जोड़ी फिटुछि महागुमर चली। आयकर विभाग एवं पुलिस टीम रो चढ़ाऊ अनिल महांती सह मिसी कलाहांडी नल्ला रे एकता समिति सभ्य थिबा विष्णुप्रिया चांद निजको हंसिदा अभिलिप्सा सजाई केमिति बुणुथिले ठकेर मायाजाल ताकू नहीं वर्तमान नुआ नुआ कहानी वर्तमान सामना को आसुछि। ना हंसिता अभिलिप्सा ना अन्य ना किछि रहिछि ताकू नहीं वर्तमान प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। राजनेतार शिल्पपति व्यवसायी ठिकादार क्राइम पार्टनर अनिल महांती सह कैपिटल रे रही हंसिता चूना लगाइबा बड़ी हाई प्रोफाइल गेम खोलिचंती तार तना घना परठारु बड़ बड़िया छाती वर्तमान दड़ दड़ होइछि। सेवाने मध्य डरे रहिछंती कारण आउ किए एथिरे संपृक्त रहिछंती ताकू नहीं वर्तमान चली तना घना। नुआ दिल्ली भुवनेश्वर कलाहांडी कंधमाल सबुठी हट्ट चमट जारी रही। यारी भितर सामना को आसुछि नुआ चित्र नुआ कहानी। आसवा परवर्ती खबर को इस्रोर नुआ अध्यक्ष नियुक्ति होइछि। वर्तमान गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसुछि जे इस्रोर नुआ अध्यक्ष नियुक्ति वी नारायण हेले इस्रोर नुआ अध्यक्ष। केंद्र सरकार को कैबिनेट नियुक्ति कमिटी पक्षर विज्ञप्ति आसंता 14 तारीख में दायित्व ग्रहण करेंगे नारायण। 2 वर्ष पर्यंत इस्रो अध्यक्ष दायित्व में रहिते। गुरुत्वपूर्ण खबर जे इस्रोर नुआ अध्यक्ष नियुक्ति होइछंती वी नारायण होइछंती इस्रोर नुआ अध्यक्ष। केंद्र सरकार को कैबिनेट नियुक्ति कमिटी पक्षर विज्ञप्ति आसंता 14 तारीख में दायित्व ग्रहण करेंगे नारायण। 2 वर्ष पर्यंत इस्रो अध्यक्ष दायित्व में रहिबे। गुरुत्वपूर्ण खबर जे इस्रोर नुआ अध्यक्ष भाव में दायित्व नहीं नियुक्ति होइछंती वी नारायण। नुआ अध्यक्ष नियुक्ति नहीं केंद्र सरकार को कैबिनेट नियुक्ति कमिटी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। आसंता 14 तारीख में दायित्व ग्रहण करेंगे नारायण। 2 वर्ष पर्यंत भारतीय महाकाश गवेषणा संस्थार अध्यक्ष दायित्व में रहिबे। 1984 इस्रो रे सामिल होइतिले वी नारायण। वर्तमान से लिक्विड पॉपुलेशन सिस्टम सेंटर निर्देशक रही। प्राय 4 दशंधि क्यारियर रे से इस्रोर अनेक प्रमुख पदपदवी रही आसी। डॉक्टर नारायण को पारदर्शित रॉकेट एवं महाकाशयान अनेक दक्षता रही। अनेक किसी से कार्य करिछंती। महाकाश आयोगर अध्यक्ष थिबा नारायण क्रायोजन इंजीनियर विकास प्रमुख भूमिका रही। मार्गदर्शन रे विभिन्न कार्य होइछि। इस्रोर विभिन्न मिशन पाई 183 लिक्विड पॉपुलेशन प्रभावशाली कंट्रोल पावर प्लांट डिलीवर करथिले। अनेक किछि दक्षता रही। या सहित महाकाशर चंद्रयान 2 एवं चंद्रयान 3 से
पॉपुलेशन सिस्टम रे मध्य सहयोग करथिले। नूतन नियुक्ति नहीं से प्रतिक्रिया रखी कहते इसरो को अधिक उच्चतार पहुंचाइबे। गुरुत्वपूर्ण खबर सामना को आसुछि जे इसरोर नुआ अध्यक्ष नियुक्ति पाइछन्ति वी नारायण जे नुआ अध्यक्ष भाव में नियुक्ति पाइछन्ति। केंद्र सरकार को कैबिनेट रे नियुक्ति मिली। आसंता 14 तारीख में दायित्व ग्रहण करेंगे नारायण। 2 वर्ष पर्यंत इसरो अध्यक्ष दायित्व में रहिबे। गुरुत्वपूर्ण खबर जे इसरोर नुआ अध्यक्ष भाव में दायित्व नहीं वी नारायण। एने कैबिनेट नियुक्ति कमिटी पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। आसंता 14 तारीख में दायित्व ग्रहण करेंगे नारायण। आसवा परवर्ती खबर को मुख्यमंत्री जिले में खनिज जिला पांठिर अनियमितता अभियोग हाईकोर्ट को तदंत निर्देश दिया जायछि। केन्दुझर जिला खनिज पांठिर पूर्व सरकार समय जिला पालुवा आशीष ठाकरे एवं तांकर अन्य किछि कर्मचारी मिसी लुट करथिबा अभियोग हाटडी ब्लॉक रे जने व्यक्ति हाईकोर्ट रे अभियोग करथिले, जहाको नै माननीय हाईकोर्ट याको गुरुत्वपूर्ण सह नै मामला रे अभियोग को भित्ति करी राज्य सरकार प्रमुख शासन सचिव मनोज आहूजा को तदंत करने को निर्देश देइछन्ते। जार पूरा कहानी कहिछन्ते आम कैमरा सामने अभियोगकारी। केन्दुझर जिला डीएमएफ फंड प्रथमतः जिलार स्वार्थ को गुरुत्व दिया गोटे प्रधान भूमिका ग्रहण करथाए, किंतु डीएमएफ फाउंडेशन ट्रस्ट केन्दुझर रे जो माने चेयरपर्सन रहिले किंबा सीईओ रहिले से माने सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन जो रही से गाइडलाइन अनुसार कौन काम करना। गत सेप्टेम्बर 10, 2019 मसीह ओडिशा मुख्य शासन सचिव प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट रे एक बैठक करथिले, जो बैठक रे से गोटे निर्देशनामा जारी करथिले जे प्रत्येक प्रकल्पर अनुदान मूल्य 30-40-30 अनुपात रे रिलीज हबो, किंतु आमर डीएमएफ तरफ संपूर्ण 100% पैसा रिलीज कर दिया है। आउ केतक प्रकल्प बाबद 50% रु अधिका पैसा रिलीज कर दिया जाइए। जो रिलीज करदेवा फल जो जो डिपार्टमेंट गुड़ी को देले से माने दीर्घ दिन धरिकी काम कलेनी, जहाँफल से माने किसी भी सुध पाइले बैंक बही से सुध पैसा को खाईदेले। आज पर्यंत काम होने दीर्घ 2 वर्ष है बहुत प्रकल्प कोटी कोटी टंका मंजूर करा जाइछि, तांको प्रदान करा जाइछि, से काम भी होनी। ये गोटे कथा। आउ गोटे द्वितीय कथा होउछि जे टेम्परारी किंबा परमानेंट पदवी पूरण निमते प्रथमे गवर्नमेंट रो अप्रूवल दरकार अछि डीएमएफ रो, किंतु ताहा न करिकी एई केन्दुझर जिला डीएमएफ तरफ मन इच्छा नियुक्ति करा जाइछि। पुणी नियुक्ति करा जाइकी तांको डीएमएफ फंड रु मध्य दरमा आकार रे अर्थ खर्च करा जाइछि, किंतु सेई मीटिंग रे जो मीटिंग मुख्य शासन सचिव करथिले सेतिरे से दर्शाइथिले कर्मचारी माननकु दिया जिवो प्रोजेक्ट कंटीजेंसी रु, किंतु प्रोजेक्ट कंटीजेंसी न देइके डीएमएफ कंटीजेंसी रु पैसा दिया गला। आ जो विभिन्न विभाग को जो अनुदान पठाला किसी विभाग जो काम कले ता बाबद जो प्रोजेक्ट कंटीजेंसी आदाय है से प्रोजेक्ट कंटीजेंसी आज पर्यंत डीएमएफ फंड रे नहीं कि से विभाग गुड़ाक डीएमएफ फंड को देना। ये गला। आउ गोटे कथा होची डीएमएफ फंड जो पासबुक अच्छी से जी शुद्ध ब्याग तरफ मिलूँ ताकू मध्य खाई देछंती। मिनिमम मुख्यतः आउ कहीं थांतु न थांतु डीएम। आसवा परवर्ती खबर को जराजीर्ण अवस्था चांदवाली सरकारी बरफ कल तेबे एही स्थान रे चाषी मानक पई शीतल भंडार करने को दाबी होछि। चांदवाली सरकारी बरफ कल दीर्घ वर्ष हेबो जराजीर्ण अवस्था पड़ी रही। विगत दिन में ए बरफ कल उपरे चांदवाली राजकनिका कोसिया एवं धामरा अंचल में लक्ष लक्ष मत्स्यजीवी बरफ कल उपरे निर्भर करुवा बेले आज को 20 वर्ष पूर्व हेब कार्यक्षम न हो जराजीर्ण अवस्था पड़ी रही बरफ कल।
हेले दुख और परितापर विषय दीर्घ वर्ष हेब बरफकल बंद होइतिबा बेले एबे भी कार्यरत थिबा कर्मचारी ए स्थान रे थिबा सरकारी गृह रे बसवास करुथिबा सहित मोटा अंकर दरमा मध्य नेउछंती। ए बरफकलर भित्तिभूमि 1 एकर 28 डिसमिल थिबा बेले या बालेश्वर मेराइन द्वारा परिचालित करा जाउथला। हेले बे चांदवाली वासी अभियोग नूतन सरकार चाषी मानक पई घोषणा करथिबा समस्त ब्लॉक रे शीतल भंडार ए स्थान रे करा गले चाषी माने उपकृत होंते बोली चांदवाली रे बुद्धिजीवी मत प्रकाश करिसंते। तेज जराजीर्ण अवस्था चांदवाली सरकारी बरफ ब्रिटिश अमलर संबूर मौजार 1 एकर 28 परिधि मध्य एक सरकारी बरफ कल चली चांदवाली भद्रक राजकनिका धामरा पर्यंत एठू बरफ जाई माछ बेपार करा जाउथला एवं हजार हजार लोक एठी बरफ नहीं माछ बेपार कर जीवन जीविका निर्वाह करुथिले। किंतु 1999 मसीहा महाबात्या ठारू ये बरफ कलर अधपतन है प्राय 15-20 वर्ष धरी सरकारी बरफ कल संपूर्ण बंद अच्छी कारण घरोई बरफ कल चलने फल राज्य सरकार आउ बरफ कलर जो पदाधिकारी मैंने दृष्टि देले नहीं अचल हो पड़ा एवं जहाँफल बर्तमान सुधा 4-5 जन कर्मचारी बसी बसी दरमा नौकरी किंतु तांकर किछि काम नहीं। आमे चाहूँ अंचलवासी पक्षर दाबी करा जाउछि 1 एकर 28 परिधि मध्य राज्य सरकार एवं योजना करुचंती एक शीतल भंडार प्रति ब्लॉक रे हब तेणु यही सरकारी बरफ कल अपरिचित अवस्था अच्छी एवं से विपद संकुल अवस्था अच्छी विषधर सर्प मैंने चल प्रचल करुचंती एटी खूब शीघ्र टेंडर माध्यम रे सरकारी बरफ कल को नीलाम कर भांगी दि जाऊ। एठारे राज्य मुना किशोर दास चांदवाली स्पोर्ट्स एकेडमी सेक्रेटरी विथ बीजेपी युव सक्रिय कर्मी। कौन कहे जो दीर्घ वर्ष धरिक आज सरकारी बरफ कल चांदवाली बंद होकर रही कि दाबी उठुची तुरंत बंद कर शीतल भंडार कर कौन कहे चांदवाली बुद्धिजीवी हिसाब से चांदवाली दीर्घ दिन हम जो बरफ कल सरकारी बरफ कल से बंद हो पड़ी तार जो 5टी कर्मचारी अच्छा बसी शोक से दरमा नौ बीजेपी सरकार आसवा ठार जो डिक्लेयर कले प्रत्येक पंचायत ब्लॉक रे शीतल भंडार हाँपाई चांदवाली ब्लॉक उपयुक्त स्थान हूँ से जगह काली मंदिर पाख बरफ कल से जगह हवा उपयुक्त स्थान। केते चाषी निर्भर करते शीतल भंडार केते चाषी उपकृत है चांदवाली ब्लॉक सहित आम ये पाख राजकनिका ब्लॉक विजय कुमार पाढ़ी चांदवाली ब्लॉक कौन कहे जराजीर्ण अवस्था पड़ी बर्तन सरकारी बरफ कल दीर्घ वर्ष धरी कौन कहे आपको चांदवालीवासी हिसाब चांदवालीवासी हिसाब मोर मोहन सरकार पाखे गोटे दाबी रखुची जराजीर्ण अवस्था जो बरफ कल चांदवाली पड़ी से कर्मचारी भी अच्छा लक्ष लक्ष टंका सरकारी पांठि सहायता दरमा पाँच सरकार को मोर विशेष अनुरोध जे से बरफ कलटा को बंद करा जाई चांदवाली ब्लॉक रोटे शीतल भंडार हवाटा निहाती आवश्यक सेटा ध्यान दे शीतल भंडारटा कले चांदवालीवासी बहु उपकृत हेबे। केते चाषी निर्भर करते चांदवाली ब्लॉक प्राय 1 लाख ऊर्ध्व हेबे चाषी निर्भर करुचंती चांदवाली ब्लॉक किंतु शीतल भंडारटा निहाती आवश्यक बरफ कल तो चालू नहीं बंद करा जाऊ सेई लोक। आसवा परवर्ती खबर को स्कूल रे पड़ी ताला बारिंडारे बसी पाठ पढ़ुछंती छात्र छात्री एभली घटना देखा मिली कलाहांडी जिला नल्ला ब्लॉक अंतर्गत गोड़ाबंद पंचायत जोड़ाबंद प्राथमिक विद्यालय रे 1961 मसीह स्थापित होइथिबा ए स्कूल रे प्रथम रु पंचम पर्यंत 23 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री अध्ययन करुछंती। स्कूल निर्माण समय रे ए गाँव चतुर्बाझी जमीदान करथिले एथिपाई तांकर नारे तांको पुओंको ना थिबा मध्य फलक उक्त स्कूल रे कांथरे लागिछि। 11 डिसमिल परमित जगार निर्मित एही स्कूल रे केवल 2 डिसमिल जगह स्कूल नारे सरकारी रेकर्ड रे थिबा बेले बाकी 9 डिसमिल जगह मौखिक भाव दान करा जाइथिबा स्थानीय लोके प्रकाश करछंती किंतु वर्तमान दानकर्ता सान पुओ कुंज जानी जमी देबे नाही बोली स्कूल रे आसी ताला पकाई जाइछंती जहाँ फल कि बारंडारे बसी पाठ पढ़ुछंती छात्र छात्री। ए समस्या को नहीं ग्रामवासी माने ब्लॉक प्रशासन रो द्वारस्थ होइतिले मध्य किछि सुफल मिलु नथिबा ग्रामवासी माने प्रकाश करछंती।
डिसेम्बर 4 2024 आम स्कूल ताला पड़ी जाइए बस पाठ पढ़ी पार केनता कर पढ़ुछ 12टा पढ़ुछ लगे बहुत असुविधा हो आम स्कूल आज्ञा गत डिसेम्बर 4 तारीख रु करी ये जमी बाबद रे एका ताला बंद ए ताला बंद करिछ कुंज बिहारी जान शत्रु जानी तांकर बापा से वर्तमान तो नहांती से 26/3/2061 मसीहा ये भूमि दान करते आंकर स्मृति पाई ये दानकर्तार स्मृति पाई तांको बड़ पुओ नृपराज जानी से अनुरोध करथिले मु से समय भारप्राप्त प्रधान शिक्षक थी एठी गोटे स्मृति फलक भी लगाई आपण मैंने देखिपार से स्मृति फलक 26/2015 तारीख टा मन पड़े। आसवा परवर्ती खबर को गुणपुर पुलिस पक्षरु सड़क सुरक्षा सप्ताह पालित होइछि। सड़क सुरक्षा सप्ताह पालन अवसर में मीडिया क्लब गुणपुर एवं आदर्श थाना गुणपुर अनुकूल्य ए सचेतनता शोभायात्रा अनुष्ठित होइछि। एही शोभायात्रा रे मीडिया क्लब गुणपुर सभापति गुणपुर एसडीपीओ एवं गुणपुर थाना अधिकारी प्रत्यक्ष तत्वावधान में अनुष्ठित होइतिला। स्थानीय पुराना बस स्टाण्ड ठारे गांधी प्रतिमूर्ति रे पुष्प माल्यार्पण अर्पण करी शोभायात्राटी सहर परिक्रमा करी बस स्टाण्ड नूतन बस स्टाण्ड दे बाईपास छक पर्यंत जाइतला। ए शोभायात्रा रे मीडिया क्लब समस्त सदस्य एवं गुणपुर थानार कर्मचारी समेत वंशधारा हायर सेकेंडरी स्कूल छात्र छात्री माने मध्य जोग दैथिले। वर्तमान आमर जनवरी 1 रु जनवरी 7 भितर रोड सेफ्टी वीक बा सड़क सुरक्षा सप्ताहटी पालन होची जो थी कि आम रास्ता चल प्रचल करुवा समस्त जानवाहन को आम समस्ते निर्देश करमर अनुरोध थाए जे समस्ते ट्रैफिक नियम को मानि जमती गाड़ी चलेबे जहाद्वारा कि दुर्घटनार आम सम्मुखीन रु बंची पारिबा। जेमती कि आम जो मोटरसाइकेल रे जाऊ से समस्ते हेलमेट पिंधा दरकार, जिते कार रे जाऊ से समस्ते सीट बेल्ट पिंधा एवं ट्रैफिक रो जहाँ भी नियम अच्छी सबको मानि चलिबा एवं द्रुत गति को आम सब एवॉइड करवा दरकार। द्रुत गति सब महाविपत्ति। द्रुत गति रे जदि आम जीवा ताले एक्सीडेंट चांसेस बहुत थाए एवं ड्रिंक करी केबे भी गाड़ी चलेबा नहीं, मद्यपान करी जदि गाड़ी चलेबा ताले एक्सीडेंट बहुत चांसेस थाए। तेणु करी समस्त को आम अनुरोध करूछु जे ट्रैफिक नियम मानि समस्त गाड़ी चलेबे एवं हेलमेट पिंधिबे, सीट बेल्ट पिंधिबे, मद्यपान करी गाड़ी चलेबे नहीं। समस्त को मैं अनुरोध करुच्ची। बर्तमान मुझे धन्यवाद दूसरी आम मीडिया क्लब भाई मानक जो मानकर प्रचेष्टार एभली गोटे बहुत बढ़िया काम गोटे है एवं पुलिस एवं मीडिया क्लब मिसी आज आम जो रैली कलु यह बहुत सक्सेस होती। समस्त को धन्यवाद। नमस्कार। वर्तमान आमर जनवरी 1 रु जनवरी 7 भितर रोड सेफ्टी वीक बा सड़क सुरक्षा सप्ताहटी पालन होची जो थी कि आम रास्ता चल प्रचल करुवा समस्त जानवाहन को आम समस्ते निर्देश करमर अनुरोध थाए जे समस्ते ट्रैफिक नियम को मानि जमती गाड़ी चलेबे जहाद्वारा कि दुर्घटनार आम सम्मुखीन रु बंची पारिबा। जेमती कि आम जो मोटरसाइकेल रे जाऊ से समस्ते हेलमेट पिंधा दरकार, जिते कार रे जाऊ से समस्ते सीट बेल्ट पिंधिबा एवं ट्रैफिक रो जहाँ भी नियम अच्छी सबको मानि चलिबा एवं द्रुत गति को आम सब एवॉइड करवा दरकार। द्रुत गति आसवा परवर्ती खबर को नालकोर 45तम प्रतिष्ठा दिवस पालित होइछि। अनुगुल नवरत्न कंपनी नालकोर 45तम प्रतिष्ठा दिवस पालन करिछि। नालको तेबे 2 दिनिया ए प्रतिष्ठा दिवस पालन करा जाइछि। ए दिवस रे प्रथम दिन रे मुख्य अतिथि भावे प्रदीप प्रज्वलन करी उद्घाटन करा जाइतला। नालकोर ईडी नालकोर समस्त कर्मचारी को सेमानकर कार्य पाई धन्यवाद दैथिले। परे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रे विभिन्न स्कूल पिला माने भाग नैथिले। फाउंडेशन समस्या मोर समस्त भाई भौणी मान को नालकोनियंस मोर पेरिफेरी जो मैंने अच्छा प्लस ऑल द स्टेक होल्डर्स बिकज तांकर कंट्रीब्यूशन पे नालको आज जो पहुंची समस्त भूमिका अच्छी और तांकर स्पेशल कंट्रीब्यूशन पे नालको आज आमर ए स्तर में पहुंची और आगो को माड़ी उन्नत स्तर को ग्रोथ पाथ चली जाऊँगी। तेणु मोर कहवा कथा आम फ्यूचर आम स्मेल्टर प्लांट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी ऑलरेडी आसूची और पावर प्लांट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट भी निकट में हवा जाऊँगी। तो से ऑब्वियसली से जो कंपनी आगू जीव नेचुराली
हमर ऑल अराउंड पेरिफेरी लोकल समस्त डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो पार। निजुक्ति सुन निजुक्ति प्रक्रिया आप जानते गवर्नमेंट पॉलिसी रिक्रुटमेंट अनुसार होची अल्प दिन भितर रिक्रुटमेंट एडवर्टाइजमेंट बाहरी ऑलरेडी इन द प्रोसेस अच्छी आगो भी रिक्रुटमेंट चलो प्लस एक्सपेंशन प्रोजेक्ट आसले फर्दर रिक्रुटमेंट एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार आम कर नाल्कोर ये 45तम प्रतिष्ठा दिवस रे मोर समस्त नाल्को परिवार सदस्य मानक अभिनंदन। नाल्को ओडिशार अर्थनीति क्षेत्र में गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करिछि एवं भारतर अर्थनीति को मध्य समृद्ध करिछि। मु भाबुछि भविष्य में ये यात्रा जारी रहिबो। नाल्को फ्रेटर्निटी on behalf of NALCO fraternity and all the people who are helping NALCO in achieving whatever we are doing today, all people who are directly or indirectly involved, all the partners of progress, everyone has contributed for the growth of the company so far, and now I am looking forward to achieving what we are designed to achieve. And now the government has mandated us to go for 480,000 tons of metric ton of metal, and we are going to achieve them in the leaps and bounds. Every time we are adding some or more metal, and this time also we are going to better our performance, and we are supported by our coal mines, our own coal mines, to decide the price of the metal what we are going to produce to remain competitive in the market. We are also taking care of securing fuel security for us, and we are also expanding, and when we are expanding we are also adding 1.5 MTPA. सकाळ बड़ खबर को एठी रखुछो। नमस्कार। International School, classes from nursery to 12, facilitate science, commerce and humanities in CBSE pattern. Adarsh International School is the flagship institute of the prestigious Adarsh Group of Institutions, founded by Dr. Mahesh Chandra Dhar in 2016. The aim is to provide an enabling ambience that helps to nurture and develop every child's unique talent and potential to the fullest. एजुकेशन उपर मोर बेसी वीकनेस प्राय लोकालिटीर पिला आहरी उपरको जावाई से एजुकेशन कटक भुवनेश्वर पिला जाऊे बहुत हैरान होते जहाँफल आम मिडिल अफ द ओडिशा से अनुगुल गोटे करने निष्पत्ति नहीं। The facilitates world-class infrastructure, professionally qualified and experienced teachers, digital and air-conditioned classrooms, well-equipped laboratories, eco-friendly environment and health checkup programs, co-curriculums, yoga, gymnasium, games, dance, music and many more. Adarsh International School provides hostel facilities, day boarding facilities and hygienic foods. Moral and value-based education. Make your child to inculcate the habit and passion for learning. Help them to have a sound mind in a sound body. Adarsh International School, Panchamahala near RTO Anugur. Contact 94380 68116. Kalinga Institute of Medical Sciences Bhubaneswar is one of the most pioneer healthcare. भाइरस पई सरकार संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। भुवनेश्वर एम्स और आईसीएमआर रे परीक्षा व्यवस्था रहिछि। आईसीएमआर आरएमआरसी रे परीक्षा व्यवस्था रहिछि। तेबे
जेकोसी स्वास्थ्य विपर्यय पर सरकार प्रस्तुत रही सूचना दी जाइए राज्य सरकार पक्षर स्वास्थ्य विभाग पक्षर एने सूचना जारी करा जाइए कौनसी मते आतंकित नमस्कार बड़ खबर बड़ डिबेट को स्वागत करुच्ची मो शुभस्मिता वर्तमान भारत में देखा मिलूँ एचएमपीवी भाइरस संक्रमण जहाँ नहीं समस्त मनरे गोटे द्वंद्व आसी कोरोना परी व्यापीब नहीं तो कारण एचएमपीवी कारणरू कर्नाटक रे वर्तमान 2 रु अधिक संक्रमित चिन्हट हो सारी यार भितरे कर्नाटक सरकार समस्त को मास्क पिंधिबापई मध्य परामर्श देइछंती कोरोना भली पूर्वरु जो भली लक्षण सब गुड़िक रही भूताणु संक्रमणर से समान लक्षण रहिबो तेबे भारत में व्यापिलेनी एचएमपीवी भाइरस कर्नाटक रे मास्क पिंधिबापई दिया जाइछि परामर्श गहली स्थान में मास्क पिंधिबाकू स्वास्थ्य विभाग परामर्श मास्क पिंधिले कमिब संक्रमण लक्षण थिले पाटी और नाक कभर करने परामर्श दिया जाइछि स्वास्थ्य विभाग पक्षरु देश में 4टी शिशु आक्रांत चिन्हट हो सारी बेंगलुरु में 2 जन कोलकाता रे जड़े शिशु आक्रांत होइतबा बेले अहमदाबाद रे मध्य अन्य जड़े व्यक्ति संक्रमित होइतबा सूचना रही यार भितरे 2 मासर शिशु शरीर में एचएमपीवी भाइरस आसुथिबार सूचना रही भारत पूर्वरु नेदरलैंड रे चिन्हट होइतिला भाइरस play a very significant role, and we do look forward to that unfolding of the saga which we are envisaging under the Honorable Prime Minister's leadership of a Viksit Bharat 2047. So I welcome all our esteemed guests and all of you once again to this gathering. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Now let's immerse ourselves in a glimpse of Odisha's transformative journey and the abundant opportunities it offers. Presenting to you the promotional video, Transforming Odisha, Opportunities Unlocked. Can we have a look on the screen, please, everyone? Thank you. महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजन पैकी एक होगा। Welcome to the land of bountiful nature, vibrant culture and deep-rooted history. श्री मोहन चरण माझी Welcome to the land where burgeoning growth meets unfathomable potential, leading to boundless opportunities. Welcome to Odisha. Really, there is no deficit. It has a business orientation. This state is progressing leaps and bounds to come and invest in Odisha.
we welcome you to invest in Odisha, where endless opportunities are poised to meet a radiant future. Come and explore new opportunities. We hope the video inspired you as much as it inspired us. Moving ahead, it's time to delve deeper into the investment potentials of Odisha. Ladies and gentlemen, I would be requesting the presence of Principal Secretary, Industry Department, Government of Odisha, Shri Hemant Sharma, who has been a key player in creating a robust industrial ecosystem in Odisha, who will present the key investment opportunities in the state. Sir. Ladies and gentlemen, did you like this video? Can we have a round of applause, please? And even more energetic round of applause for our friends who have come from all parts of the world, the Pravasi Bhartiyas, please. Honorable Sir, I would be making a very brief presentation about the industrial investment opportunities in Odisha. But since we are honored to have the presence of our Honorable External Affairs Minister, to begin with, this is what Odisha is in terms of size. It is of the size of Bangladesh. In terms of population, it is of the size of Spain. So, Honorable Minister, sir, since you are the External Affairs Minister, it would be easy for you certainly to place us. We have a US $110 economy, 11% of India's water, 480 kilometers of the coast of the Indian coastline. What makes Odisha an interesting and attractive investment destination? I'll just speak on these 5 points very briefly. Our polity, the democratic polity, our economy, geography, policy, and the demography. What is it about our policy, our polity, the demographic polity? What you see on stage is what the change in government is. Ladies and gentlemen, what gives speed to a train? Engine. What gives double straight speed to a train? Do you see that on stage? That is our democratic polity. We have our Honorable Chief Minister, our Honorable External Affairs Minister, and under their leadership, we are going to witness the next phase of Odisha's growth. Our economy has been growing at more than 10% in the last few years. In fact, we are a significant contribution to the growth of Indian economy. There are states growing at a rate lower than us, and there are states growing at a rate faster than us. However, we are a significant contributor to the growth of Indian economy, which today is a beacon of hope in the world, as our Honorable Prime Minister says. We are also one of the fastest growing economy and diversified economies in India, because we get 43%, almost 40% from contribution from industry sector, 38% from services sector, and the balance from agriculture sector. More importantly, because of certain features related to our geography and our polity, we have been receiving good investment intents. The top graph on the right-hand side shows a data given by Center for Monitoring of Indian Economy, where we are the second highest investment attracting state in the country today. Just below Maharashtra, but above Gujarat, above Karnataka, above Tamil Nadu and UP. And the left bottom graph shows a graph by the Reserve Bank of India, not only large investment intents, but also conversion into actual investment opportunities by assistance from financial markets, from capital markets, from banks and other financial institutions. But what drives this growth? What drives this growth is that Odisha is a mineral-rich coastal state. While there are states in the country who are mineral-rich, for instance, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, but they are not coastal. And there are coastal states, for instance, Andhra Pradesh, but they are not mineral-rich. We are twice blessed by the Lord Jagannath. We have 25% of India's coal, 35% of India's iron ore, 45% of India's manganese, 55% of India's bauxite, almost the entire nickel and chromite. More importantly, we are blessed with rare earths. On the coast of Odisha, we are blessed with rare earths, which is giving us the next age of growth in ilmenite, monazite, and also in titanium.
Not only the mineral advantage, we have converted it into the metals advantage. By following a policy of local value addition, we are the largest producer of iron, largest producer of steel, largest producer of stainless steel, largest producer of bauxite, largest producer of alumina, largest producer of aluminium. And not only that, there is a significant growth which is happening. The steel capacities will be added more than 100 million tons per annum. And kindly take a look at this map of Odisha, where you would see that all these investments are spread throughout the state, which gives us tremendous advantage in terms of being able to attract more companies, more and more companies in the entire value chain, from mining to mineral to metal. In fact, there are companies, for instance, TYK from Japan, Welspun from Gujarat, Caldris from Spain, Aldris from Almatis from France, SMS Group from Germany, Magna again from France, TRL Kosaki from Japan, who have already discovered this value chain prospects in Odisha. It takes 4 million tons of material to be moved for 1 ton of steel. And it requires 8 million tons of material to be moved for 1 million ton of aluminium. And 1 ton of aluminium requires 300 kilograms of 18 other chemicals. Today, all of these chemicals, barring a few, come from a country, I need not name that country. This is a huge opportunity in Odisha. The second advantage which we derive from our geography is our being coastal nature. We are on the east coast of India. We are within 6 hours from 50% of the world economy. The Southeast East Asian nations, countries like Singapore, Sri Lanka, all the Far East countries are closer to us in eastern seaboard than the rest of India on the western seaboard. And we have been able to utilize this advantage in a systematical planned manner by setting up ports on our long coastline, starting with Paradip Port, which is a Government of India port, the largest port in India today. Dhamra Port, which is run by Adanis, and Gopalpur Port, which is also run by Adanis. Aside from that, there is a port at Suvarnrekha being developed by Tatas, and 2 more ports which will be coming up for development in the next 2 to 3 years. Immense opportunities on the coastal region. This coastal advantage, the port advantage, has helped us also become emerging leaders in chemicals and petrochemicals. We are the new destination for textiles, technical textiles, and apparel, and also in food and seafood processing. In fact, sir, I am very happy to inform the Honorable Minister today, we have a proud NRI AK Mishra who has come all the way from Dubai. He is already establishing a plant in Odisha. We have from Mauritius Mr. Kohli, Amit Kohli, who represents the Firemount Textiles, who is setting up one of the largest denim manufacturing in Odisha. We have Mr. Mahesh Amlian from Sri Lanka, the Mas Group, who are setting up a very large investment. Similarly, in seafood processing, now there are opportunities opening up in Far East and Southeast Asian and other markets, and we would certainly take advantage of the presence of our friends from other countries to spread this word. In chemicals and petrochemicals, again, there are large number of companies who have discovered the coastal advantage of Odisha. We have one of the 3 PCPIRs in the country, the other 2 being in Andhra Pradesh and Gujarat. And because of the Indian Oil Corporation's dual feed naphtha cracker project, the next wave of investments in chemicals and petrochemicals is coming up in Odisha. Same thing in textiles, technical textiles and apparel, and also in food and seafood processing. Sir, I also wanted to bring to the notice of our Honorable External Affairs Minister, Indonesin, which is a Japanese company, today has the largest noodle manufacturing factory outside of Japan in India, in Bhubaneswar. And there are many other companies who have discovered an advantage. Similarly, the next wave of growth in Odisha is going to be in the new age sectors of renewable energy, biotechnology, electronics, IT, ITS, pharmaceuticals, and automobile and auto components. We have set up good infrastructure facilities, good promotional policies for these investments. Sir, the last point which I wanted to bring to the kind attention of our audience here is, look at this map of Odisha, map of India, which places Odisha in the scheme of Purvodaya. Andhra, Telangana, Odisha, Jharkhand, Bihar, Chhattisgarh, West Bengal, Assam, and the Northeast. This is what is called East-Northeast India. This is 50 crores of India's population. 1/3 of India's population is in this region. And in all goods and services, the CAGR, the growth of demand from consumers in this area is the fastest in India.
Look at Odisha as an entry point to this region because we are a coastal state, we are ideally located, we have good infrastructure, good policies, good skilled workforce. Therefore, Odisha can become your entry point to serve this fast emerging, larger one-third of India's market. We have set up good infrastructure facilities. Just take a very brief look here. On the east coast, we have the Eastern Expressway. On the west coast, we have the Western Expressway, and these two are connected by a East-West Expressway. All our industrial areas, all our major ports, and industrial clusters are located on this. We have ready-to-move industrial lands in good industrial estates in these areas, close to port, close to highway, close to national roads. Ease of doing business. This is the photograph of my Honorable Industries Minister receiving the Top Achiever State Award recently by Shri Piyush Goyalji, Honorable Commerce and Industries Minister, as the Top Achiever State in Ease of Doing Business. And recently, we received Achiever State in the Leeds report just 2 days ago. Again, Commerce and Industries Minister honored our state as an Achiever State in the Logistics Ease of Doing Business. Cost of doing business, the lowest in the country. Cost of industrial land, cost of water, cost of power, and cost of moving goods to other parts of the country. It has been proved by studies after studies that we are amongst the lowest in the country. World-class skilling ecosystem. Honorable Minister, sir, out of the top 100 ITIs in the country, 11 are from Odisha. Out of the top 20 ITI graduates last year, 14 were from Odisha. Sir, we are just 4% of India's population, and we account for more than 10% of the skilled workforce coming out from our ITIs and polytechnics. You go to any industrial cluster in the country today, whether it is Coimbatore or Mysore, Chennai or Bangalore, Noida or Greater Noida, Surat or Ahmedabad, you will find that the most productive, the most disciplined, and the most outcome-oriented employees are from Odisha. All this has given us a consistently growing industrial economy. The topmost domestic players are all in India, and when industries come to Odisha, they look at a long-term story because we are a consistently growing state. Therefore, come, invest in Odisha, invest in the future. Today was a brief audience with you. We are organizing our Global Investors Summit from 28 to 29 January this month. We cordially invite all our Prasi Bhartiyas to also come. We will have a longer conversation with you. We'll take you to our industrial areas and you will discover more. If you are interested, do click a photograph of this slide. We will get in touch with you. Thank you so much. Thank you for the insightful presentation, sir. Next, it is my privilege to invite our visionary leader, Honorable Minister of Industry, Skill Development and Technical Education, Government of Odisha. Please give a thundering round of applause for Shri Sampath Chandra Swai, sir. Namaskar, Jai Jagannath. Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar ji, Honorable Chief Minister of Odisha, Sri Mohan Charan Majhi ji, Chief Secretary of Odisha, Sri Manoj Ahuja ji, Principal Secretary, Industry Department, Sri Hemant Sharma ji, MD Pickle, Sri Bhupinder Singh Punia ji, esteemed business leaders, senior officials, member of the media, ladies and gentlemen. It is a great privilege to address you today on the occasion of Pravasi Bharatiya Divas 2025. This event is a celebration of the extraordinary contributions of the Indian diaspora to our nation's success. I stand here not just a representative of Odisha, but as a voice for the boundless opportunities our country and especially my state offer. Odisha is on the journey towards a remarkable transformation. We are blending our rich culture with the modern innovations to achieve growth. For us, ease of doing business is not just an idea, it is a way of life. We have simplified the investment process throughout Go Swift single window system. It ensures that all approvals happen smoothly and quickly. Investors who have come to Odisha appreciate our
transparent and responsive governance. Our recognition as a top achiever in the Business Reformers Action Plan BRAP 2025 reflects our commitment on progress. Odisha has become a trusted partner for business worldwide. Whether you are a big company or a new entrepreneur, we offer policies that ensure stability and growth. Our governance model is very simple. We listen, we adapt, and we evolve with the industry needs. Our key strengths include huge raw material, strong industrial infrastructure, and strategic coastal location. We have 3 operational ports with more under development. These ports connect Odisha to global markets. Our strategic location on Indian's eastern coast make Odisha a gateway to ASEAN and BIMSTEC countries. We are the only state in India which is mineral rich and has uninterrupted access to such a long coastline. Further, we are also developing industrial corridor, logistic hubs, and sector-specific parks for chemical, petrochemicals, food processing, textile and apparels, and IT. Odisha is ready for industrial excellence. Odisha's rich natural resources, strategic coastal location, skilled workforce, and a proactive governance create the perfect environment for business. Key sectors such as metal downstream, chemical, textile, food processing, and IT and ITIS are growing fast. Additionally, Odisha is also becoming a hub for new age industries like renewable energy, electronics manufacturing, and green fuels. We are ready to partner with you to unlock this immense potential and achieve success together. Our highly skilled and low-cost workforce is another key strength. Through the Skilled in Odisha initiative, we have created a talent pool that meets global standards. Our young, dynamic workforce is disciplined, hardworking, and ready to deliver. Odia people are recognized worldwide for the dedication and work ethic. By investing in Odisha, you invest in these talented people who will help your business to grow. Investing in Odisha is more than just doing business. It's joining a thriving ecosystem. We are committed to ensure your investments to grow and succeed. Our government will support you every step of the way. I invite each of you to join us on this exciting journey. Don't just invest in Odisha, growth with Odisha. Together we can build industries, create jobs, and shape a brighter future together. Lastly, I am happy to invite you to the Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025, which will be held on January 28th and 29th January in Bhubaneswar. This conclave will bring together business leaders, innovators, and policymakers from across the globe. This premier platform is your gateway to new opportunity, to partnerships that will shape the future of industry in India. Thank you. I look forward to welcome you all to Bhubaneswar. Bande Utkal Janani, Jai Hind. Thank you so much, sir. Thank you for your amazing words. Next, we have the honor of hearing from a distinguished diplomat and a statesman who has represented India on the global stage with unparalleled competence and has been pivotal in shaping India's foreign policy to align with the aspirations of its citizens and diaspora. With an illustrious career spanning over 4 decades, he has served as India's ambassador to several key nations and played a critical role in negotiating landmark agreements. His leadership has significantly enhanced India's global standing. Ladies and gentlemen, give a thundering round of applause. Let's have on the podium Dr. S. Jaishankar, Honorable External Affairs Minister of India, for his special address. Honorable Chief Minister, Shri Mohan Charan Maji ji,
Honorable Industries Minister Shri Sampath Charan Swain ji, Chief Secretary Manoj Ahuja ji, Principal Secretary Hemant Sharma ji, MD Epicol Bhupendra Singh Punia ji, Excellencies, my Pravasi brothers and sisters. It's a great pleasure to welcome you all today. Namaskar and Jai Jagannath. In the course of a long work life, I've been called many things. Today was the first time I was called a second engine of a train. It was a novel description, but a very good one. I appreciate it very much. And I think the message of double engine is the first message we want to give you from this event. But I do want to ask all of you, our Pravasi visitors especially, of the importance of doing a business session, a joint business session on an occasion like this. Because persons of Indian origin and non-resident Indians, you are in many ways are connect to the world. We often use the word a living bridge for all of you. And the fact is, India will be unique in terms of a major power rising, which has actually used, is using and will continue to use its diaspora as a very important pathway for its globalization and for its rise in the international order. Now, why is that important? It is important because if you look at the history of the world, especially the modern world, no country has grown by itself. Every country has grown with partners, with global partners. And at this time, for us, that partnership, a partnership which will supplement resources, which will infuse technology, which will introduce best practices, that is absolutely essential if India is to attain its potential. And that is where NRIs and PIOs can really make a difference. Now, our Prime Minister often talks of 3 T's when it comes to evaluating foreign policy. In fact, we use the 3 T's in the Foreign Ministry to evaluate our own people as well. And the 3 T's are trade, technology, and tourism. And I want you today to reflect on those 3 T's located as you are in Bhubaneswar from the perspective of Odisha. So the first T, trade. I think you have seen through the presentations what a blessing Odisha has in terms of resources. But resources do not automatically translate into trade. Resources need investments, resources need facilities, resources need connectivity. And today, how to increase, how to do the value add so that what you trade is not just resources but value adds from it. And how to leverage the location of Odisha. Because if one looks ahead, you know, the eastern seaboard of India is going to become a crucial exposure, a connect of India to the world. We have spoken of the Look East policy. In many ways, you can say the Look East policy actually has a historical origin in the state called Bali Yatra. That the connect to Southeast Asia actually started in Odisha. That today, this eastward connection, and I can visualize it in the coming decades. When I was last time in Singapore, we have a ministerial mechanism. One of the important subjects we discussed were green shipping corridors. So
whether it is, orthodox shipping, whether it is green shipping, whether it is power grids, whether, as I said, it is resources, the value adds on it, the potential for trade based from Odisha is really enormous. The second T, of course, is technology. But this T is increasingly acquiring a particular connotation in the world today. Technology is not like a manufactured good. It has, in the digital era, a very high element of trust. Countries, people, organizations want to know where is their data, who is processing it, who is harvesting it, who will deploy it. And technology, therefore, is increasingly associated with trusted talent. So when we speak here, and my colleague, the Principal Secretary, spoke about it, we saw a little bit of it in the slide as well. The talent of Odisha, the fact that today you have young demography, you have a very strong education backbone of this state. Today, technology also offers a lot of possibilities for collaboration. And the third, of course, is tourism. Many of you perhaps would be here for the first time. Some of you come from this state. But I can tell you, I had an opportunity yesterday to see some of the tourism possibilities for myself. I think this state is simply incredible in terms of what it has to offer. And again, it's not just for your aesthetic satisfaction I'm saying this. I'm making this as an investment pitch that tourism is the biggest employer generator and multiplier in the world. Those who will invest in tourism in this state are actually, in a sense, obviously helping themselves, but they are actually contributing to development and to inclusive growth in the state in a very, very powerful way. So I would today, other than the message of the double engine, want to give you the message of those three T's, that trade with and from Odisha, technology and tourism. These are really very important dimensions of what this state has to offer. I'm very glad again the point was made about the Modi government's commitment to Purvodaya, the renaissance, the revival, the rejuvenation of the East. India was historically at its greatest point when the eastern parts of India were at the height of their glory. And I can tell you that one of the earliest commitments in this term, the third term of the Modi government, was to take the practical decisions to enable Purvodaya to actually happen. And a crucial, I would say, almost a fulcrum of that, in many ways, is the state of Odisha. So, let me conclude by saying this. I have been a fairly long time in the government, a little less in politics, briefly even in business. And I can tell you that when people look for, investment, when people look for business, at the end of the day, what is most important for them is to get a good sense about their partners. They will evaluate ease of doing business. They will look at ease of living, how non-bureaucratic a decision making is. They will look at the quality of infrastructure, what Gati Shakti has been delivering and will continue to deliver. They will assess the talent of a society. They will look for political stability. They will look for policy stability which comes from political stability. But at the end of the day, it's not just information that investors and business partners will seek.
They will also look at the quality of leadership. Today you have Team Odisha's leadership in front of you. I'm confident that it inspires as much confidence in you as it does in me. And I am really very confident that today's meeting is the beginning of a conversation that many of you will come back to this state again and again, that your confidence will translate into business propositions and into investment decisions. Thank you again for your attention. Ladies and gentlemen, gratitude to Honorable Minister Sir for his insightful and thought-provoking special address today. I would also like to take this moment to introduce about a remarkable book authored by himself, Why Bharat Matters. This compelling work delves into India's strategic significance, historical resilience, and aspirations for the future. I personally urge everyone here to explore it as it offers profound insights into why Bharat stands tall in global affairs and why understanding its journey is crucial for all of us. This book has 11 interconnected essays that delves into India's foreign policy, emphasizing its cultural values and global ambitions. He has highlighted various aspects, India's initiatives such as Sagar, Neighborhood First, showcasing India's emergence as a positive force internationally. Thank you so much, sir. Moving ahead, it's my privilege to invite our Honorable Chief Minister of Odisha, Shri Mohan Charan Majhi, for his address to the August gathering. A leader of profound vision and dedication, also known for his grassroots connects and innovative policies, Shri Majhi has transformed Odisha into a hub of industrial and cultural excellence. A big round of applause. Thank you. Sir, over to you. Jai Jagannath, Namaskar, good morning. Honorable Minister, External Affairs, Dr. S. Jaishankarji, Honorable Minister, Industries, Skill Development and Technical Education, Government of Odisha, Sri Sampath Chandra Swai, Chief Secretary, Sri Manoj Ahuja, Principal Secretary, Industries, Sri Hemant Sharma, Managing Director, Epicol, Odisha, Sri Bhupendra Singh Punia, business leaders of India and diaspora, business leaders from Odia diaspora, distinguished guests, ladies and gentlemen. Welcome to the land of Lord Jagannath. Welcome to the land of opportunities, Odisha. I am delighted and feel privileged to address such esteemed guests of India and diaspora members, entrepreneurs and visionaries. I extend a warm welcome to each one of you to this special session. Your presence here affirms Odisha's potential as India's investment destination of choice. While over Odisha is known as the land of Lord Jagannath, we have been a prominent center of art, craft and architecture for centuries. Today, we are fast emerging as a growth engine of India. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we are working hard to achieve the goal of Samruddha Odisha by 2036 and Vikasit Bharat by 2047. A key component of Prime Minister's vision of Vikasit Bharat is Purvodaya, development of the eastern Indian states. Odisha is the front runner of this effort. I, on behalf of the people of Odisha, extend a warm welcome to you to come and invest
in Odisha. Since my government has been formed, Odisha has got investment proposals of 2.2 lakh crores and job creation will be 1.4 lakh jobs. Now, let me indulge in brief why you must come here and do business in the state. Odisha is the second richest state with mineral resources. You name it and we have it. Odisha is perhaps the most peaceful state in the entire country with stable law and order. There are no social fault lines disturbing peace. The state has a history of giving stable political environment. The state has an impressive infrastructure with networks of national highways, state highways, black top arterial roads, 3 functional seaports, and 2 major airports with about 4 more smaller airports to serve smooth connectivity. 2 more major airports are coming up at Puri and Charbatia. Odisha has one of the busiest rail corridors linking virtually to all parts of India. Availability of skilled as well as unskilled manpower at the right cost as compared to other industrial states and more our state with investor-friendly industrial policy. What more the industry requires, you can virtually tick all the boxes for setting up industry in this place. I can assure you that we are already to work for steps if you chose to work half a step. We have only one condition: people of the state ought to benefit from it. The Union government under the leadership of Prime Minister Modi ji has sanctioned road and railway projects worth about $5 billion as 40,000 crores in last 6 months. Odisha's capital outlay is highest among the major Indian states, 6.3% of gross state domestic product. The state has a consistent record of growth under the visionary leadership of our leader Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We have already become the 5th largest economy in the world and at present the fastest growing big economy. India is now the only shining star over a sea of gloom and doom around us. Odisha also aspires to be a part of this growth journey. While from the 13th biggest economy in the country, we want to propel ourselves to be among the top 5 economies in the country. I hope as the country celebrates its 100 years of independence in 2047, we will achieve this goal and Odisha will be in the proud club with a $1 trillion economy. For realizing this goal, foundation has to be strong and should be laid yearly, which we are doing with Utkarsh Odisha. In order to achieve this, we have a defined and clear roadmap. Our vision for Odisha's transformation is centered on future-ready sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, petrochemicals, textiles, pharmaceuticals, and biotechnology. Youth are an unbound source of energy, innovation, and in order to make them industry ready, we are providing them the required skill education. I will fail in my duty if I don't mention the wonderful gift nature has gifted us.
The natural bounty of virgin forests, beautification on green mountains, 480-kilometer long coastline and sea beaches, Asia's largest saltwater natural lake, hundreds of historical and religious places. What more you need to invest in the field of tourism? I urge the diaspora to explore the possibility in this important sector, which promises so much possibilities. Under the visionary leadership of our beloved Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have already become the 5th largest economy in the world and at present the fastest growing big economy. After we achieve the goal of $5 trillion economy in a year or so, we will be aiming at building India to enter the coveted $10 trillion economy in next 5 to 7 years. Odisha also aspires to be a part of this growth journey, while from the 13th biggest economy in the country, with about $100 billion USD economy, we want to propose ourselves to be among the top 5 economy in the country. With the power of the double engine governance and blessing of our beloved and visionary Prime Minister Shri Modi ji, it will be realized sooner than later. As we prepare for a Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave 2025, I extend a warm invitation to all of you to join us in this journey. Odisha is on the move, and together we can shape a future for shared prosperity. India is the favorite destination of global FDI in the world, and we want to make Odisha as the favorite destination of FDI in India. Thank you all for being here today, and I look forward to welcoming you to the Utkarsh Odisha Make in Odisha Conclave at Bhubaneswar. Come, invest in Odisha, invest in future. Thank you for gracing the occasion and make us proud. Bande Utkal Janani, Jai Hind. Thank you. Thank you so much, sir. True flag bearer of Odia Asmita, who relentlessly working with a vision to achieve Viksit Odisha 2036. Atiti Deva Bhava, इसी परंपरा को सम्मान देते हुए, I would be requesting Honorable Minister Industry to present our traditional representation of Odisha Handloom Uttarya to Honorable Minister External Affairs, Dr. S. Jaishankar, Government of India. Everyone, please give a thundering round of applause. I'd be requesting Honorable CM Sir to present a token of appreciation, a memento to Dr. S. Jaishankar, Honorable Minister, External Affairs, Government of India, for his humble presence. Thank you so much, sir. I'd be now requesting MD Bicol, Sri Bhupinder Singh Punia, for official vote of thanks. Thank you. Honorable dignitaries on the dais, esteemed guests, industry friends, good afternoon, namaskar. As we come close to the insightful session, it is my privilege to deliver the vote of thanks on behalf of Government of Odisha and EPICOL. Firstly, I would like to thank Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. J. Shankar. Sir, your inspiring words and steadfast support have emphasized the pivotal role of partnerships between the Indian diaspora and states in India's growth story. Thank you, sir, for sharing your vision and reinforcing Odisha's global ambitions. Sir, your 3T mantra of trade, technology and tourism, sir, we will follow in future, sir. I would like to thank our Honorable Chief Minister, Sri Mohan Charan Majhi, sir. Your visionary address has highlighted Odisha's transformation as a leading destination for innovation, sustainable industrialization, global connectivity.
Your leadership continues to inspire us to aim for greater heights. Thank you, sir. I also thank Sri Sampath Charan Swai, Honorable Minister, Industries and Skill Development and Technical Education, for his constant support. Sir, your dedicated efforts towards creating a business-friendly ecosystem in Odisha are instrumental in driving investment and fostering inclusive growth. Thank you, sir. I thank Chief Secretary, Sir, Sri Manoj Ahuja. I thank Hemant, Secretary Industries, and most importantly, a special note of gratitude and thank to all the members of diaspora and business community who has joined this session. Your contribution towards Odisha's growth through investment, collaboration, knowledge sharing are invaluable. I again welcome, as Sir has emphasized in his address, that we have to develop partnership, and this is the beginning of the partnership. I welcome you all again in Bhubaneswar in Odisha, and this is the beginning of our partnership. So we will continue to work on this. Thank you for that again. In conclusion, I extend my sincere thanks to the Ministry of External Affairs for their partnership in organizing this session. My gratitude also goes to the team from Industries Department, EPICOL and other stakeholders who worked hard to make this session a grand success. Thank you all for your ideas, belief in Odisha's vision. Together, let's create lasting partnership and shared success. Vande Utkal Janani, Jai Hind. Thank you. Thank you so much. Thank you to our esteemed dignitaries on the dais for your valuable addition to the session. Together, let's continue to build bridges that connect Odisha and India with the global community, fostering shared growth and prosperity. I will be hereby requesting everyone to please have lunch outside, and we have two important sessions related to Odisha and of course global economy, which will be conducted in the plenary hall at Janta Maidan. I will be requesting you all post lunch to please join us for two amazing sessions awaiting for your presence and participation. And of course, in the evening, we have an astounding cultural presentation by Guru Aruna Mahanti and her troupe. Thank you so much. Once again, I will say thank all of you for your presence and participation. With this, we conclude the very first session, which was all about joint business session of MEA and Odisha. Thank you so much. मैसेज आया है कि ये ऐप डाउनलोड करके इन्वेस्ट कर लो, रातों रात शेयर के भाव डबल हो जाएंगे। कर लो डाउनलोड, अगर पैसे से हाथ धोना हो तो। डॉक्टर रोगी कुमार, MBBS हूँ, MURKH नहीं हूँ। याद रहे, UPI कहता है अगर कोई आसान कमाई का लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जय जगन्नाथ। चलैवा पाई मठर जो शिक्षानुष्ठान गुड़िक ताकू करबा पाई केउठी अछि रूपा इटा एमआर मठरू जबत 545 खंड इटाकू नहीं पुणी बढ़ी चर्चा। रूपा छाउणी रे झलसुछि पतित पावन मंदिर, आगकू रत्न भंडार द्वार समेत प्रभा खिलण आदि छाउणी हेबो। एतिकी बेले जबत रूपा इटाकू श्रीमंदिर प्रशासन मार्फत को आनी ताकू कामरे लगाइबाकू दाबी जोर धरिछि। भक्तଙ୍କ दान रूपरे श्रीमंदिरर विभिन्न द्वार रे रूपा छाउणी होइथबा बेले सिंहद्वार भली अन्य 3 द्वार को रूपा छाउणी करिबाकू दाबी करिसेंति सेवायत।
लोकଙ୍କ दाबीକୁ गुरुत्व देई विचार कराजिबा सह जांच कराଯାउछि बोली कहिसेंती पुरी जिलापाल तथा श्रीमंदिर उपमुख्य प्रशासक। तो विगत दिन में एमआर मठरू जो 522 खंड इटा बाहला से जो प्रश्न आपणकर से पुलिस हिफाजत कस्टडी आज जाए से रूपा इटा सुरक्षित भाव में अच्छी पूर्व सरकार किंतु चलती सरकार जो आसी जदि गोटे पदक्षेप नियंते तो जो 5टी कलाहाट द्वार आरंभ कर सिंहद्वार पर्यंत जो रूपार व्यवस्था है गोटे अति सुंदर लगुच आप एंट्री कला आरंभ कर पतित पावन मंदिर रूपार छाउणी आरंभ कार्य प्राय चली शेष अवस्था अच्छी तो मोटामोटी जिनस देखा गले 522 खंड इटा ताकू सरकार जदि निज अधीनस्थ को लेकिन जदि आउ 3 द्वार अच्छी दक्षिण द्वार पश्चिम द्वार उत्तर द्वार अच्छी आ सुतराम जदि भोगमंडप टी जदि रूपारे कर दिया जाए ताल सी गोटे झलसीब जमीक आम जिते जाऊ पंजाब जाऊ गोटे गोल्डन टेम्पल कथा आसे गोल्डन मंदिर कथा आसे जमी देखीदे गोटे मन भरी जाए महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ ये सर्व अलंकार युक्तमय महाप्रभु हीरा नीला मोती माणिक्य वैजंत्र से निजे जड़भूत होता भी आम मैनेजिंग कमिटी रे आलोचना है कि एप्रोप्रिएट लॉ डिपार्टमेंट को भी अवगत करा जायछि से जेहेतु से गोटे इश्यू भी चलछि अपन जानि छथि सेटा एप्रोप्रिएट फोरम रे डिसाइड हो से दाबीटी डेफिनेटली अछि एवं नै हमर तुम कहली वर्तमान केवल हमर मरामती कार्यटी होउछि एवं परवर्ती समय रे जो दरकार हमर जो स्पेशली भीतर रत्न भंडार रो को प्रति हमर गेट्स आमर मान को माने जो डोर अच्छी तार कौन रूपरेख हम से धार्य जेहेतु संपूर्ण है टेक्निकल टीम ए सहित आलोचना करके धार्य कर एंड सुना जो छाउणी हम आई थिंक एप्रोप्रिएट आकलन कर 2021 रे एमआर मठरू जबत होइथिला 522 खंड रूपा इटा सेतेबेले एहार मूल्य 90 कोटी अनुमान करा जायतिला। 2 श्रमिक रूपा इटा बिकी धरा पड़िबा परे एमआर मठ पर्यंत पहुंचीथिला पुलिस। देवोत्तर विभाग पाखरे मठ तरफरु ए संपत्ति को नहीं कौनसी सूचना दिया जाय नथिला तेणु इटा को जबत करा जायतिला। परे 23 खंड मिसाई समुदाय 545 खंड रूपा इटा